Hello and welcome back to another session. In this session, we will discuss about conventional programming, some AI models. I will show you how AI models are getting trained day by day and the intelligence system. So, first of all, C++ is high level programming language. High level mean it has syntax which is human readable. So computer by nature are electronic machines. They only understand digits 0101, like these are electronic devices, so they have switches on off. So on the top of that, we have built the high level programming languages. So C++ is programming language, conventional programming language. So understanding this understanding how it works is very important as a developer, because in your whole life as a software engineer you are going to develop the programs, whether these are automations and conventional programming and so on. So now let's talk about the AI, because we are living in the era of AI. So AI is everywhere. So AI is helping us in every field, whether it is education, whether this is software development, because ChatGPT can write any program. As a human, you should understand how to write the pseudocode. So let's talk a little bit to ChatGPT. Hello, how are you? I'm doing well, thanks. How about you? How can I help today? Okay, I am fine. So can you tell me who I am and what I'm doing? Sure, Arshad. You're a manager QA with a strong interest in automation and software development processes. You've been working on a variety of projects, including creating a QA bot, developing an auto code suggestion feature for Playwright with PyTest, and automating API testing. You're also involved in developing an online academy and working towards achieving CMMI Level 2 for your organization. Quite a range of activities. Yes, okay. So, can you tell me that what's on my five next 5 years plan? I can't predict the future, but I can help you map out a potential 5 year plan based on your interests and goals. Here are some ideas. 1. Professional development. Continue expanding your automation skills, perhaps becoming an expert in various testing frameworks and tools. 2. Aim for higher leadership roles, like Director of QA or even CTO position, where you can drive strategic decisions. 3. Entrepreneurship. Grow your smart extension board business or start a new venture in a field you're passionate about. 4. Innovation. Lead innovative projects like your online academy to revolutionize learning or other industries. CMMI Level 3 Plus. Aim to elevate your organization to higher CMMI levels, showcasing your commitment to process improvement. What do you think? We can refine these ideas based on your interests. Okay, sure. Thank you very much for your information. So, you know each and everything about me. That's very interesting. I'm glad you found it helpful. It's always great to chat with you. If you need more advice or just want to discuss your plans, feel free to ask. Oh, okay, okay. One more question. Can you tell me why we should study C++? plus plus? Studying C++ is beneficial for several reasons. 1. Performance. C++ offers fine-grained control over system resources, making it ideal for developing high-performance applications. 2. Versatility. It's used in a wide range of applications, from game development to systems programming, and even in embedded systems. 3. Object-oriented programming. Learning C++ gives you a strong foundation in OOP, which is a key paradigm in modern programming. 4. Standard template library.
C++ has a rich library that provides various general classes and functions, which can save time and effort in coding. 5. Career opportunities, like game development, finance, and tech, often seek professionals with C++ skills. Learning C++ can open up a wide range of opportunities and give you a deeper understanding of how software works. Okay, thank you very much. Bye. You're welcome. Bye for now. अच्छा, तो जैसा आपने देखा इसको सारी इन्फॉर्मेशन पता है, ये मॉडल है, ट्रेन हो गया है, ठीक है। और अच्छा, अब ये है कि हम सिस्टम इसके आगे दुनिया अब से आगे दुनिया एडवांसमेंट्स कर रही है। जैसे मार्क ज़करबर्ग का विजन है कि हम वर्चुअल रियलिटी बनाएंगे, ठीक है। सो चलो छोड़ो उसको, अभी हम डिस्कस करते हैं सी प्लस प्लस। अच्छा, सी प्लस प्लस जो हमारी है, इसमें हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस सेशन में हम इनपुट आउटपुट, ठीक है, सी इन सी आउट, ठीक है। सी इन सी आउट कुछ रिज़र्व वर्ड्स हैं हमारे जो हैं, मतलब वो हम नहीं कहीं भी यूज़ कर सकते, ठीक है। वो उनका एक ही मकसद है। सी इन का मतलब है इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर को। सी आउट का मतलब हम कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं आउटपुट में, ठीक है। ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट होता है कि हम वैल्यू यहाँ से एक राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 5, तो 5x को असाइन हो जाएगा और x जो है ना वो वेरिएबल में 5 आ जाएगा। इस तरह से असाइनमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इंक्री मतलब ऑपरेटर्स इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह से यही है हमारा जो है ना। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का मतलब है हम ऐसे उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, यही करे वो करे, ठीक है, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। और अभी जो डिस्कस हो रहा था हमारा, ठीक है, कि हमारा जो इंटरप्रेटर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे अब सी प्लस प्लस है तो ये इंटरप्रेटिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर, अच्छा, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एक कंपाइल होती है जो सारा प्रोग्राम एक दफ़ा कंपाइल करते हैं, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जो वन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करती है, ठीक है। अच्छा, कंपाइलर आपको पता है कि ये रिसाइड कर रहा है बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे पिक्टोरियली यू कैन सी दीज आर मशीन्स, ठीक है, एंड यूज़र्स, और बीच में इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइज़र है, ठीक है, सिंटैक्स एनालाइज़र भी है। ये सारा काम जो है ना अब ये यूज़ कर रहा है। हम पहले से वैसे तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे, सही है, सी प्लस प्लस कोड के लिए, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके कंप्यूटर पर रन कर सकते हो। फिर लैंग्वेज जो हमारी है वो इस तरह से इंटरप्रेट होती है, सही है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम ऑनलाइन एक लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, शेयर स्क्रीन एंड ओके। अच्छा, तो अभी ये हमारे पास है, ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर सी प्लस प्लस, ठीक है। ये ऑनलाइन कंपाइलर हमारे पास आ जाएगा, हम इस पर कोड करेंगे, सही है। ये जो हम programmissbiz.com बना है, ठीक है। अच्छा, इसमें सारे प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस में। और आपको पता है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट के लिए है, ठीक है। ये मेन फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन हमेशा रन होता है, ठीक है। ये तो जो मेन के फंक्शन के अंदर है जो होती है ना वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इस केस में आप देखेंगे ट्राई प्रोग्रामिंग बिग्स प्रो, या ये वाला प्रोग्राम ऐसे तो हम हेलो करवाते हैं, ठीक है। हम हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
फर्स्ट प्रोग्राम हमारा यही हेलो वर्ल्ड का होता है, तो आप आउटपुट में देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन में सी आउट, ठीक है, ये हमारा रिजर्व वर्ड है जो आउटपुट डिस्प्ले करता है। ठीक है, और सिंपल कोड है ये वाला। ठीक है, आपको ये सिंटैक्स पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें हैं ना, आप इतनी पता होनी चाहिए कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये हम अच्छा चैट जीपीटी को से पूछ सकते हैं, वो भी हमें लिख दे सकती है। ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन C++। अच्छा, स्लो है। राइट ए हेलो वर्ल्ड C++। अच्छा, ये देखें, ये सिंपल प्रोग्राम इसने लिख दिया है। ठीक है, अब वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरीज। ठीक है, ये लाइब्रेरीज डेवलप हुई हैं, ये वही काम करती है इनपुट आउटपुट के, विच अलाउज टू यूज़, ठीक है, एस टी डी आउट सी आउट। ठीक है, और मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट है C++ प्रोग्राम के। ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो हम आउटपुट डिस्प्ले करें कंसोल पे, रिटर्न ज़ीरो प्रोग्राम जो है फिनिश करवा देते हैं, हम कहते हैं रिटर्न ज़ीरो करो। ठीक है, ये कोड अगर मैं कॉपी करूँ, ये एज इट इज़ कंट्रोल V किया और आप यहाँ पे रन पे क्लिक किया, तो आप देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये आउटपुट है ना, ये हम स्ट्रिंग है। ठीक है, हेलो अर्शद या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखें। ठीक है, सिंपल हेलो अर्शद इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब सी आउट हो रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये रिटर्न ज़ीरो भी अगर कर दें तो फिर भी ये चलेगा। सही है, इसमें इसके सिंपल, वेरी सिंपल प्रोग्राम है। देखें, इसमें कुछ भी नहीं है। देखें, सिंटेक्स एरर आ गया। ठीक है, अब ये वाले एरर जो है ना, ये आपने देखने कहाँ पे एरर होते हैं। ठीक है, इसको डीबगिंग कहते हैं, कि हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं हमने गलती कौन की है। ठीक है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें गाइड भी कर देती हैं कि कहाँ पे इश्यूज़ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हमें इस तरह का इशू आता है, हम चैट जीपीटी को कोई पोस्ट करें तो वो हमें सॉल्यूशन बता दे कि आप क्या मिसिंग कर रहे हो। सही है, ओके। तो नेक्स्ट, अच्छा हाँ, नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल असल पॉइंट ये है कि हर चीज़ अगर चैट जीपीटी लिख के दे सकती है, तो एज ए ह्यूमन हमें पता होना चाहिए। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नहीं है, आपको ये दे दिया जाता है, आप प्रोग्राम लिखो। ठीक है, तो आप वाइट बोर्ड पे यू शुड बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, कि यहाँ से हमने क्या इंपोर्ट करना है। ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमने जो है ना आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी एक होती है जो हमने इंपोर्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन होता है। ठीक है, इंटीजर जो है मेन फंक्शंस हमारे पास है। ठीक है, मेन फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं। आपको पता है यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पे STD लिखेंगे। ठीक है, सी आउट लिखेंगे तो हमने आउटपुट में क्या डिस्प्ले करना है ये। ठीक है, और इसके क्लोज़ करके। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर प्रोग्राम का पता होना चाहिए कि हमने कैसे प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना आपको होना चाहिए। ठीक है, हम ये स्लैश इंक्लूड करना होता है लाइब्रेरी को, मेन फंक्शन, ये चीज़ें। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, आगे हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, बैक टू दिस। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं, स्टॉप शेयर से कहीं करते हैं।